Hello, welcome friends. In this session, we'll learn more two keywords in Java, abstract and final. And one important concept of inheritance, that how to achieve dynamic method dispatch. Now, dynamic method dispatch is also known as method overriding, late binding, or you can also say runtime polymorphism. That means you have already some idea about dynamic method dispatch, because I have already covered the concept of method overriding. सर अगर हम डायनेमिक मेथड डिस्पैच और मेथड ओवरराइडिंग दोनों एक ही है ऐसा आप बता रहे हो, दैट मीन्स हमको ये सब पता है, बट मेथड ओवरराइडिंग के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे हमको लगे कि वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करता था. सो इन दिस लेक्चर यू विल लर्न मेथड ओवरराइडिंग इन डिटेल. सो हाउ एक्चुअली अचीव मेथड ओवरराइडिंग एंड why it is called late binding or why it is called runtime polymorphism. So we'll start with the program as usual in NetBeans. So open NetBeans, new project, Java application, next, and I will keep the name lecture 8, finish. And first we'll make the Java class. और हम क्या चेक करने वाले हैं? First we are going to learn how to achieve dynamic method dispatch or how to achieve runtime polymorphism in Java. So run time finish. चलो इसको हम निकाल देते हैं. चलो एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं इस पर. Here I am going to take one name, one class, base class shape, and inside this class I will define one method public void area, and I am going to print some message like find out the area of various shapes. Okay, now one more class circle, and which extends the properties from its base class shape, and in this class again I am going to use the same method area to achieve the concept of method overriding. Do you remember this concept? Good. System.out.println, and here I am going to write the formula for area of. यहाँ पे मैं पूरा प्रोग्राम नहीं कर रहा, so I will just simply print out the message. So मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा. वैसे what is the formula for finding the area of circle? 1/2 base into height. Okay, chalo. Then I will take one more derived class and kept the name rectangle, which also extends the property from the base class shape. Ultimately here I am going to create the hierarchical inheritance in which I have only one base class but number of derived class. So circle, then rectangle, and again the same method public void area, and system.out.println. Here I am going to write the formula for calculating the area of rectangle. Okay, and one more class triangle, which also extends the property from its base class shape. The same method public void area. Okay, and system.out.println formula
for calculating the area of triangle. यहाँ पे मैंने सर्कल की एरिया की फॉर्मूला गलत बोली थी. मैंने क्या बोला था? 1/2 बेस इंटू हाइट. एक्चुअली दैट इज द फॉर्मूला फॉर द ट्राइंगल. और सर्कल की फॉर्मूला क्या है एरिया फाइंड करने की? पाई आर स्क्वायर, और इसकी एल इंटू बी. ओके, अभी हमको फॉर्मूला पर नहीं जाना. वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग. सो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है? वन बेस क्लास विथ वन मेथड एरिया, देन 3 derived class circle, rectangle and triangle, and achieve the concept of method overriding. Clear up to this? Okay, now inside the main method, here I first create the object of base class shape s equal to new shape. Okay, then I will create the object of derived class circle c equal to new circle, then rectangle r equal to new rectangle, then triangle t equal to new triangle. मतलब हमारे पास जितने भी क्लास थे वो सारे क्लास के ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं. ओके, now if I am going to write c dot area, that means ये एरिया मेथड कहाँ से आने वाली है? कौन से क्लास में से? सर्कल. और उसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल. सो अल्टीमेटली आई विल गेट द एरिया ऑफ सर्कल. राइट क्लिक, रन, एंड फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल. ओके, सो सर्कल का आंसर मिलेगा. इफ आई एम गोइंग टू राइट r डॉट एरिया, इसको निकाल देता हूं. सो एरिया मेथड कौन से क्लास में से आएगी? फ्रॉम द रेक्टेंगल, फ्रॉम द. सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू राइट t डॉट एरिया, देन इट विल कॉल द एरिया मेथड फ्रॉम द ट्राइंगल. नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मैं यहां पे कुछ अलग करने वाला हूं. फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट s equal to c semicolon. चलो, what do you mean by this statement? s क्या है? बेस क्लास शेप का ऑब्जेक्ट, और c क्या है? डिराइव क्लास सर्कल का ऑब्जेक्ट. एंड हियर आई हैव यूज्ड इक्वल टू साइन between two objects, just like same as variable. जैसे हम इक्वल टू साइन दो वेरिएबल के बीच यूज करते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच यूज किया हुआ है इक्वल टू साइन. दैट मीन्स हियर आई एम गोइंग टू असाइन द वैल्यू ऑफ सर्कल ऑब्जेक्ट टू द शेप क्लास ऑब्जेक्ट. और आफ्टर राइटिंग दिस स्टेटमेंट, इफ आई एम गोइंग टू राइट s डॉट एरिया, so this area method will call, वो कहां से कॉल होगी? एरिया कॉल एरिया मेथड फ्रॉम विच क्लास? जल्दी जल्दी, विच क्लास? it will call the area method from the circle class. Why? Because here I have assigned the whole circle object to the shape class object. चलो एक बार और करते हैं. Here I am going to write s equal to r, और उसके बाद लिखता हूं s dot area. So it will call the area method from which class? Rectangle class. Why? Before executing this line, I have assigned the object of rectangle to the shape class object. So it will call the area method from the rectangle class. Clear or no? Yes or no? Okay. s equal to t, और उसके बाद लिखता हूं s dot area. So this will call the area method from the triangle class. This is used to achieve runtime polymorphism. During compilation of your program, your JVM will not have any idea कि उसको कौन से ऑब्जेक्ट से
कौन से क्लास की एरिया मेथड कॉल करवानी है. बट व्हेन यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, एट दैट टाइम JVM को एग्जैक्टली पता होगा ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ योर प्रोग्राम कि उसको कौन से क्लास के अंदर से एरिया में, क्योंकि हर बार मैं एक ही लाइन लिख रहा हूं. कौन सी लाइन लिख रहा हूं? एस डॉट एरिया, एस डॉट एरिया, एस डॉट एरिया, और हर बार अलग अलग एरिया मेथड कॉल होती है. सो हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल? बिकॉज बिफोर राइटिंग दिस स्टेटमेंट मैं और कुछ भी लिख रहा हूं. क्या लिख रहा हूं? अगर मैंने लिखा है s इक्वल टू सी, देन इट विल कॉल द एरिया मेथड फ्रॉम द सर्कल. अगर मैंने लिखा है s इक्वल टू r, देन इट विल कॉल द एरिया मेथड फ्रॉम द रेक्टेंगल. और ये सब कुछ कहां पे डिसाइड और कब डिसाइड होगा? व्हेन यू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, व्हेन यू रन योर प्रोग्राम. That's why this is called runtime polymorphism. That's why this is called method overriding or late binding. Late binding means what? After compilation of your program, बहुत लेट उसको पता चलता है कि उसको कौन सी एरिया मेथड कॉल करवानी है. और सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कॉल दिस कंसेप्ट टू दी डायनेमिक मेथड डिस्पैच. चलो ये प्रोग्राम को रन करते हैं. पहले क्या प्रिंट होने वाला है? एस डॉट एरिया. पहले कौन सी एरिया मेथड कॉल होगी? सर्कल की, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल. राइट क्लिक, रन, and I will get the output. Formula for area of circle, then rectangle, then triangle. So this is how you can achieve the dynamic method dispatch concept in inheritance. Clear? Good. Now come to the PPT. The next concept, abstract keyword in Java. अरे हमने तो ऑलरेडी ये प्रोग्राम डेवलप कर दिया है. यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है? एक क्लास शेप, दैट इज माय बेस क्लास, एंड आई हैव टू डिफाइन 3 derived class rectangle which extends from the shape, circle and triangle. So इसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं and I will try to explain you the concept of abstract keyword. Okay? So open that program in NetBeans. Okay, चलो यहाँ पे मुझे बताओ कि सर्कल की एरिया मेथड की जरूरत क्या है. In this method I have written the formula for calculating the area of circle. चलो रेक्टेंगल की एरिया मेथड की जरूरत क्या है? यहाँ पे मैं रेक्टेंगल की फॉर्मूला लिखूंगा. और ट्राइंगल के अंदर एरिया मेथड की जरूरत क्या है? यहाँ पे मैं किसकी फॉर्मूला लिखूंगा? ट्राइंगल के. लेकिन शेप क्लास के अंदर एरिया मेथड की जरूरत क्या है? What is the need of defining area method into the shape class? If you don't require the logic or body of any method, so why you should waste your memory? You got my point? ये एरिया मेथड की मुझे काम जरूरत पड़ेगी, ये एरिया मेथड मेरे काम किया और ये एरिया मेथड मेरे काम के, बट there is no need of this area method from the shape class. This is just used to tell that I am going to use the concept of overriding. सिर्फ उतना बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये एरिया मेथड ली हुई है. So ultimately I am wasting my memory. So as a solution, Java provide the abstract keyword. If I am going to declare this method as a abstract method, then I do not require to write down the body or logic part of the abstract method. I can simply write abstract public void area and finally the semicolon. So this is how you can declare any method as an abstract method. So in which situation we have to use abstract keyword? अगर कोई क्लास के अंदर आपके पास ऐसी मेथड है जिसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, दैट मीन्स शेप के अंदर मुझे एरिया मेथड की जरूरत नहीं है, लेकिन इन द फॉलोइंग क्लासेस मैं कंपलसरी ये मेथड का लॉजिक लिखने वाला हूं, मैं कंपलसरी ये मेथड का यूज करने वाला हूं. अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है, सो इन दैट केस यू कैन डिक्लेयर दैट मेथड एज ए
abstract method. And when you declare any method as a abstract, that means it does not occupy any memory in your CPU, in your program. So whenever your JVM will interpret this statement abstract public void area, that means उसका मीनिंग वो क्या निकलेगा कि अभी एरिया मेथड की शेप के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, बट लेटर ऑन मैं जो भी डिराइव क्लासेस लूँगा और जिसके अंदर भी मैं शेप क्लास का एज ए बेस क्लास यूज़ करने वाला हूँ, वो सारे क्लासेस के अंदर आई एम गोइंग टू राइट डाउन द लॉजिक फॉर दिस एरिया मेथड, और वो मैंने लिखा है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट. एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव डिफाइंड any method as an abstract method in any class, then compulsory you have to declare that class as a abstract. So मान लो कि आपके क्लास के अंदर 5 मेथड्स है और आउट ऑफ ऑल 5 मेथड्स एक मेथड की आपको अभी जरूरत नहीं है. सो 5 में से अगर आप एक मेथड को भी एज ए एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हो, इन दैट केस ऑल्सो कंपल्सरी यू हैव टू डिक्लेयर दैट क्लास एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, can I declare a normal method inside the abstract class? Yes, I can declare any normal method. So I can easily write public void display. I can declare any normal method inside the abstract class. I don't have any problem. Okay, so inside the abstract class, it's fine. There's no problem. Clear? Yes or no? Okay. So first हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आपके पास कोई ऐसे मेथड है जिसकी फिलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है, so you can simply declare that method as an abstract method. If you have made any method as an abstract, then compulsory you have to declare that class as an abstract also. And one more thing that you have to remember for the abstract class is, यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? शेप एस इक्वल टू न्यू शेप, और शेप क्लास हमारा कौन सा क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट. दैट मीन्स यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस स्टेटमेंट. वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. सो हियर आई कैन नॉट राइट शेप एस इक्वल टू न्यू शेप, बट I can write, look over here, I can write shape as. It's no problem. Why? Shape as का meaning क्या है? I am just going to create the reference only. Object कब बनता है? Whenever you are going to use the concept of new with the class. जैसे ही आप new कीवर्ड का यूज करते हो, वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस किस में कन्वर्ट होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर. लेकिन मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर रहा. आई विल सिंपली राइट शेप एस. अगर आपको मेरा पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर याद हो, सो इन दैट केस आई हैव आल्सो डिफाइंड दैट मैं दूसरी लाइन के अंदर भी ऐसा लिख सकता हूँ, एस इक्वल टू न्यू शेप. यस, क्लियर? सो यहाँ पे मैंने सिर्फ पहली लाइन की जरूरत है. दैट मीन्स आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट only reference. I can create the reference of abstract class, but I cannot create the object of reference class. So इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है. मैंने सिर्फ क्या चेंजेस किए उसके अंदर? जिस मेथड की जरूरत नहीं थी उसको मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया? एब्स्ट्रैक्ट. एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट हैव एनी बॉडी पार्ट, सो यू कैन write down the method name and simply put the semicolon. And if you have declared any method as an abstract, then compulsory your class become the abstract class. And what are the properties of abstract class? You cannot create the object of abstract class, but you can create the reference. Okay, right click, run, and I will get the same output, no problem. But this program is the memory efficient program because area method है, इसकी memory occupy नहीं होती. So this is all about how to use
abstract keyword with method as well as with class. Got it? Okay. Now the new keyword is final keyword. Right click, new Java class, final demo. Chalo. We'll take one base class, class A1, and in this class to write one variable integer a equal to 20 and one method public void taste, and inside the taste I'm going to write inside base class. Okay, then we'll define one derived class extends A1, and in this class again I'm going to repeat the same method public void taste and sout inside derived class. Clear? Okay, and into the main method I'm going to create the object of b1 class, b1 b equal to new b and b dot taste. Clear? Okay, this is just the simple inheritance program. What will be the output of this program? Create the object of derived class and b dot taste. Ultimately JVM will call the taste method from the derived class. So right click, run, and I will get the output inside derived class. Now you can use final keyword with variable, with method as well as with class. पहले हम वेरिएबल के साथ उसका यूज करके देखते हैं. Okay, here I am going to write final integer a equal to 20, and inside the taste class I am going to write a plus plus. NetBeans will show us an error. NetBeans मुझे एरर दिखा रहा है, और वो क्या एरर है? Cannot assign a value to the final variable a. That means if you have declared any variable as a final variable, then that variable becomes a constant. Means throughout of your program you cannot change the value of that variable. So यहाँ पे मैंने a plus plus करके क्या करने की कोशिश की है? Here I am trying to change the value. Here I am trying to increment the value of final variable, and that thing is not allowed in Java. So ultimately, if you are using the final keyword with variable, that means you are declaring a constant in Java. Clear? Okay. Now, if I am going to write final in front of any method, then I cannot override that method into the derived class. So ultimately, final keyword prevent the method overriding concept. I cannot override any final method of the base class inside the derived class. And if I am going to write final with class, then I cannot use this class as a base class anymore. So ultimately, when you are going to use final keyword with class, that means that final keyword will prevent the inheritance concept. I cannot use that class as a base class. So these are the three use of final keyword. If you are going to use final keyword with variable, that means you are declaring a constant. If you are using final keyword with method, that means it will prevent the method overriding concept. And use of final with any class, ultimately
denied that you cannot use that class as a base class. So these are the three use of final keyword. So in this lecture we have covered the three concepts. The first one is dynamic method dispatch. The second one is how to use the abstract keyword. Here I have also defined the characteristic of abstract keyword. Cannot create the object of abstract class. Then once you define any method as an abstract in any class, then that class must be declared as an abstract. Then abstract class may contain the normal method, and if you have declared any method as an abstract, that means in the following div class compulsory you have to implement the logic for that method, like area method of the shape class. Clear? Then we have discussed the concept of final. Final keyword is used to declare the constant. Final variable cannot change its value. Final methods cannot be overridden, and final classes cannot be extended or inherited. Okay, so these are okay. One more important questions: can we create constructor in abstract class? Question mark. That is a self study. First you have to give me the answer yes or no, and finally you have to provide me the solution if yes. Okay, so that's it from this session. So we have completed total how many keywords? This keyword, super keyword, final keyword. So we have completed total 3 important keywords. So thank you, goodbye, thank you for listening, goodbye. That's it from this session. We'll meet in the next session very soon with some more interesting concept. Thank you.